Hello to all of you. I hope all of you are doing great. So, today we are going to talk about sources and resources of energy besides its conservation. That what are the methods, techniques, and ways via which we can save our energy. So I hope I'm audible properly and the screen is also clearly visible. So let's start, and that is what is it is written as a title. So first let us know what are the sources and then resources. Sources and resources of energy and its conservation. Right? So that is the topic that we are going to talk about. Now sources are in singular form, that is source. So source, as you know, it is what? It is origin of something, right? It is the origin of something. For example, as we know that a well can be the source of fresh water. Fresh water. Similarly, sun is the source of what? Energy. Or we can also say that college and school are the sources of what? Knowledge, right? Similarly, matter are the sources of all energy that we know, right? Now, what are resources? Resources of energy. So, resources in terms of energy, something valuable or prolific. Something valuable or prolific for us, for us, right? And hence we consume to serve a particular function. I hope you get the basic idea about resources of energy. For example, solar energy. Solar energy as a uh, resource, while sun, as we already talked about it, as the source of what? This energy, because the solar energy originates from
sun. Similarly, rain is the source of what? Source of rainwater. Rainwater. And hence, rainwater is the resource in this regard, because we can harvest rainwater for many purposes. Now let me check that we are going good and we have no problem of communication. I hope so. Now coming to the main idea, and that is sources of energy. So generally we have main energy sources, that is nuclear fusion, or you can say reactions, nuclear reactions, particularly in the sun. Number second, we have gravitational effect or gravity between the earth and moon. And similarly, we have internal energy of the earth. It is regarding geothermal energy, and this can be concerned to geothermal energy. Similarly, we have stored energy in chemical bonds, right? And then we have kinetic energy, and it is particularly concerned to the flowing of water and air, right? So these are 1, 2, 3, 5 main energy sources. इसका मतलब ये है कि इससे जो हम जो आगे जाके पढ़ेंगे रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, और इन मेन 5 जो मेन एनर्जी सोर्सेज है, इनसे ओरिजिनेट होती है. सो दीज आर दी sources of energy. I hope that you are getting the basic idea. Now coming to what are the resources of energy. Resources of energy. Today's class may be a little bit longer because of the this extensive topic. Okay, so be patient. Okay, so we have those who are live, they can invite their fellows to this live session so that they also get benefit, right? Okay, please tell Paul how many days in week this class is. In this month, I mean Ramadan, I have conducted this class on particularly Wednesday and Thursday at around afternoon. It was 8 p.m. But this was the first time. This is the first time that I'm going to conduct this this class at this time. Okay, and we will be having irregular classes till Eid. I'm talking about my classes, okay, and you will be getting the information, okay, in separate group. After Eid, we will be having a regular schedule,
and you will know that. Okay, why not? I have announced the class around 2 hours before, okay, in step 2. So coming to the class, resources of energy, so it can be, as you know, this is renewable energy resources, and another one is that is non-renewable energy resources. Now let's talk about these things, what exactly they are. Okay, so as you know, renewable are replenishable in a in a given time time frame in human टाइम स्केल। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि ये रिन्यूएबल जो है ना, ये एक खास वक्त में ये रिन्यू करेगा। ठीक है, रिप्लेनिशेबल, इट नेवर रन आउट, ये खत्म नहीं होते। ठीक है, दोबारा जो है ना बार बार जो है ना रिपीट होते हैं। सो इट नेवर run out. Okay, and another one that is it has to run out eventually, आखिरकार इसे खत्म होना है। ठीक है, 2 साल बाद, 50 साल बाद, या 150 साल बाद, लेकिन इसको खत्म होना है। ठीक है, इसके कुछ क्या कहते हैं इसको, प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। So renewable energy resources are cost intensive. Keep in mind, write it please. Cost intensive. ये खासकर जो है ना इंस्टॉलेशन स्टेज में जो है ना ये कॉस्ट इंटेंसिव है। खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इस पे। जब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, इसके मुख्तलिफ जो सिस्टम होते हैं। One number second is less reliable, right? Next, it is less feasible, and next that is clean है। ठीक है, as compared to the non-renewable energy resource. Similarly, it is non-uniform. इसके एक और खामी क्या है, non-uniform है, मतलब वेरिएबल है। ठीक हो गया, you can also say variable, मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, similarly if we talk about non-renewable energy resources, so it is cost effective, इतना महंगा नहीं है जितना ये वाला है, ये renewable है, cost effective, right? It is comparatively reliable, and it is comparatively feasible. स्पेलिंग में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, टाइम भी मैनेजमेंट भी चाहिए। And one of the cons of it, that is hazardous as compared to the other one. Hazardous, toxic है। ठीक है, खासकर एटमॉस्फेयर को, GHGs के पाम में, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के मद में। Similarly, one of the cons of it, it is uniform,
यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स और बेनिफिट्स थे, हमने डिस्कस कर ली। चलो देखते हैं क्या होता है। Okay. Now come to the another point, and that is, you know, first let us discuss in detail the renewable energy resources. So that is, we will start from the sun, because sun is the source of solar energy, while solar energy is the resource, right? As we already discussed these things. So you must differentiate between sources and resources, then you will go smoothly. Okay, so sun is what? It is the source for what? For solar energy, right? Solar energy, while solar energy is the resource. Resource इसलिए है कि ये मतलब linguistically you can also conceptually logic भी है इसमें है, resource मतलब जो दोबारा renew होती है, ठीक है। So solar energy is renewable है, ठीक है, इसी वजह से इसको हम resource भी कहते हैं in that concept, okay। Similarly in this concept as well, ठीक है। Now it is what is exactly solar energy? So it is a kind of harvesting, not a kind, but you can exactly say harvesting of solar radiation, harvesting of solar radiation, ठीक है। मैं ज्यादा जो है ना लिखूंगा नहीं, ठीक है। हम सोलर रेडिएशन हार्वेस्ट करती है via many ways. It can be PV डायरेक्ट मेथड है ये वाला, directly or concentrated solar power, which is indirect method or a combination of it, ठीक हो गया। या मतलब ये वाला यूज करते हैं या ये वाला, या दोनों के मतलब जो कॉम्बिनेशन होती है सिस्टम की हम बात करते हैं वो यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल आप लिख ले, सोलर सेल है, सोलर सेल फॉर एग्जांपल वी है solar cell, okay, and that is another one, that is plate, okay, another one that is solar furnace, जो हम जो ना ये मार्केट में अवेलेबल है ये चीज है, इसके ये एग्जांपल हो गई, हो गया। अब इसके मतलब ये किस तरह होती है, ठीक है। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें, that where from solar energy comes, okay, so it is obvious that sun is the source, right, as we talked before. And in sun, that is responsible for nuclear reactions. Keep in mind nuclear reaction, write it please, nuclear reactions। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना ये हमारे पास दो किस्म की है, एक होती है न्यूक्लियर फिशन एंड अनदर वन दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसको जो हम थोड़ी शॉर्ट अंदाज में इसको समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फिशन जो है ना ये व्हेन लार्ज न्यूक्लियाई पार्टिकुलरली यूरेनियम 235, ठीक है। शॉर्टली हम इसको जो है ना ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, ये जब डिसइंटीग्रेट होते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर वन,
ओके, लार्ज जो है ना स्मॉलर वन को डिसइंटीग्रेट होते हैं या स्प्लिट अप होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। एंड अनदर वन दैट इज व्हेन इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ अबव, एग्जैक्टली when smaller one nuclei, two or more than two small nuclei combine together to form large nuclei or nucleus uh, with neutron. So that is called what they combine. This is called nuclear fusion, right? Okay. इसके मतलब जब यहाँ खासकर जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है ना, इसमें जो है ना जब ये दोनों कंबाइन होते हैं या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाते हैं एटम के, ठीक है। उसके साथ जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रल पार्टिकल इस पे चार्ज नहीं होती, इसके साथ जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, अर्थ पे। हो गया। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है? व्हाट आर द shortcomings of it? Shortcomings of solar energy. It is applicable to certain geographical regions or ranges, and it is because due to the variation of Earth and Sun position, ठीक हो गया। मतलब जो अर्थ और सन की जो टिल्ट है ना, जो पहले हमने क्लास में डिस्कस की है, इसकी वजह से जो है ना सन एनर्जी या सन पावर जो है ना अर्थ पे रेगुलर कांस्टेंट नहीं है, कई ज्यादा होती है कई कम होती है, और सीजनल भी है इसके साथ साथ, ठीक है। Similarly, one of the shortcomings of it that is a high initial cost, one, and similarly another one that is solar electricity storage technology has yet to reach its optimum potential. Solar electricity storage जो डिवाइस या टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो अभी तक ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंचे जिसकी पोटेंशियल कंसिडर की जाती है, ठीक है। एक ही हो गया, अभी भी इस पे काम जारी है कि हम इसको ऑप्टिमम जो पोटेंशियल है वहां तक पहुंच सके। एंड नंबर सेकंड, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज वाइंड एनर्जी। Okay, wind energy is what? Is resource, and its source is wind power or air. Okay, it is utilized via large turbines to take available wind, जो wind अवेलेबल है, ठीक है, या एक मसला है। To take wind is the power to turn, ठीक है, जो अवेलेबल wind है इसको यूटिलाइज करते हैं through large turbines, and in turns it rotate the turbines, ultimately generate electricity, right? ठीक हो गया। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब वाइंड जो है ना ये कहाँ से आती है, ठीक है। सो अगेन
it should be known to you. One, particular, it is air in motion, and this governed by uneven heating of earth surface by the sun। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है ना, इसे कंसेप्ट हम ये वाला कंसिडर कर सकते जो अवेलेबल है, मतलब ये भी सर्टेन रेंजेस तक अर्थ सरफेस को ये एप्लीकेबल है। इसके एक पॉइंट्स ये हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद वायर एनर्जी। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, जैसे कि पहले हमने डिफिनीशन में डिस्कस कर ले। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, और हर जगह इसलिए अवेलेबल नहीं है कि अर्थ सरफेस अनइवनली हीट होती है बाय द सन। ठीक है, और ये इसलिए है कि यह अर्थ और सन की पोजीशन क्या है, उससे रिलेटेड है, उसकी वेराइटीज है, which also create season of the earth। Similarly, another one that is unforeseen ecological impact। खासकर जो बर्ड स्ट्राइक होती है ना, ये वाइन जिसकी जो हम टर्बाइंस बनाते हैं, जो बड़े बड़े सतून होते हैं, ठीक है, एंड आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब तो उन लोगों ने जो है ना कलर कर दिए, जो पेंस होते हैं लार्ज टर्बाइन उसको कलर कर दिए, तो उसी की वजह से बर्ड्स की स्ट्राइक जो है ना उस एरिया में कम हो गई है, लेकिन ये भी एक इम्पैक्ट कंसिडर की जाती है एज रिगार्ड्स टू बर्ड स्ट्राइक। So hoping that you are getting the idea. Another one that is cost intensive. Again, as we talk in the general sense already, it installation stage, right? ये भी हो गया। आगे चल के number third, that is we have geothermal energy। अब यहाँ जो है जीव क्या है, ये अर्थ हो गया, और तम हीट से बने, ये हीट हो गया, मतलब हम बीनीथ द अर्थ जो हीट होती है उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कंसेप्ट ये है, कीप इन माइंड। ठीक है, अच्छा, तो ये किस तरह होते हैं, ये formation, how it form। So as we know that inside or beneath the earth we have radioactive particles। अब रेडिएटिव पार्टिकल्स जो है ना ऑटोमेटिकली इसकी क्या होते हैं, डीके होती है। डीके मतलब डिसइंटीग्रेट होती है, और जब ये डिसइंटीग्रेट होती है तो इट प्रोड्यूस व्हाट, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेट, दिस फिनोमेना high temperature causing rocks
hot. Okay, and then what happened? It this hot rocks heats up the water. ये मैंने फार्मूला लिख दिया, वाटर की फार्मूला H2O। ठीक है, जब ये हीट्स अप होती है, ये वाटर जो पोरस रॉक्स में ये वाटर होती है, जब ये हीट्स अप होती है, रिजल्टेंटली वी गेट स्टीम। ओके, और फिर इस स्टीम को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं थ्रू टर्बाइंस। इसके भी अलग सिस्टम है। टर्बाइंस को क्या कहते हैं, रोटेट करती है, और रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो दैट इज द वे through which geothermal energy are formed. I hope you understand. Okay, next we have hydrogen energy। ये डिटेल में है, ठीक है, इसको मतलब सीखें। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते इसमें। हाइड्रोजन एनर्जी, जिसको हम फ्यूल सेल भी कहते हैं। हो गया। अब इसके मतलब जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है, हमारे पास क्या होती है, वाटर होती है। ठीक है, वाटर में जो है ना, हम इसको अगर डिसइंटीग्रेट करें तो हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस ऑक्सीजन गैस बनते हैं। ठीक है, ये वाला B2 हो गया और ये B2 हो गया। ठीक है, हम इस हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके विया स्पेशल सिस्टम, जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं, ऊपर वाला ये। ठीक है, इससे हम करंट पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी तक ये मतलब इसकी जो पोटेंशियल है वो अभी तक undiscovered है। So still research is going on it. Okay, so one of the drawbacks of it, that is cost intensive। Okay, another one that is hydrogen availability है। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये मतलब फ्यूल सेल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। And similarly, because of the nature of hydrogen care to be taken। ठीक है, ख्याल रखने पड़ते इसके साथ जो मतलब हैंडलिंग वगैरह है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन चूंकि बाय नेचर एक्सप्लोजिव है। Coming to another, that is tidal energy, और इसको हम टाइड्स भी कहते हैं। So tides produced by gravitational effect of moon on earth surface। ठीक है, अब टाइड्स जो है ना, जब the interaction between earth and sun, so resultantly we get what, tides in ocean, and then it rise and fall by utilizing it with special system to convert this rise and fall of the tides into electricity। हो गया। अब इसकी सोर्स ओरिजिन क्या है, और हमने पहले बात की, ग्रेविटेशनल इफेक्ट बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, इसकी वजह से ये फिनोमेना प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली ड्रॉबैक्स ऑफ इट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है,
एट इंस्टॉलेशन स्टेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ साइट्स, ये मतलब जो सी शोर होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी ख़ास जगहों पे अवेलेबल होती है. Another one that is hydroelectric energy. Okay, so it is what it is, transforming the kinetic energy upward, upflowing water, upflowing water into power via building large dams. हो गया. सोर्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, या फ्लोइंग वाटर आप आसानी से कह सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रिसोर्स हो गया. प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ? कालाबा वाला डैम. ठीक है. थ्रेट्स टू लोकेलिटी, threats to locality, threats to nature, threats of flooding. ओके, इसके ही कुछ खामियां हैं. और फिर हमारे पास आते हैं बायो एनर्जी. ठीक है. Let me check that we are going good. Yes, can you explain? Yes, why not? I have explained already geothermal. Geo mean earth and thermal mean atom, heat. Okay. हम क्या करते हैं? हम जो इसकी जो एक एग्जांपल है मैं आपको ये दे रहा हूँ. जो गैसेस होती है, खासकर जो यूएसए की प्रोविंस है कैलिफोर्निया, इसके ये आम मिसाल है. ठीक है. गैसेस, लेट मी राइट इट. कुछ इसको गैसेस कहते हैं या गैसेस कहते हैं इन यूएसए. ठीक है. वी यूटिलाइज व्हाट this heat and convert it into current, I mean electricity, via turbines, via specialized or particular turbines. So that is geothermal energy. Okay. अब ये जो है ना beneath the earth ये पैदा होती है या एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ काजेज है. और काजेज क्या है? Inside the earth we have radioactive particle, and by nature radioactive particle are automatically disintegrating or decaying. मतलब स्प्लिट डिनेचर होती है. ठीक है. उसकी जो नेचर है उससे disintegrate होती है. And as a result, in that environment inside the earth, it produced continuously high temperature. Consequently, we get hot rocks. इसकी वजह से जो उस environment में जो rocks होते हैं वो हीट अप होती हैं, गर्म हो जाते हैं, और लाजमी बात है वहाँ पानी भी होते हैं. फिर वो हॉट रॉक्स जो है ना पानी को गर्म करती है, और जब ये गर्म करती है तो पानी से क्या बनते हैं?
स्टीम बनती है, जिसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं। आप जब पानी को गर्म करते हो तो एक प्रोसेस डेवलप होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक हो गया, वेपर बनते हैं, वेपर, बुखारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या स्टीम भी कहते हैं। और फिर इस स्टीम को हम टरबाइन के जरिए यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं एक खास सिस्टम के तहत। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसकी जो डेवलपमेंट है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। मतलब इसकी स्टीम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है या कम प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से भी, ठीक है, या लार्ज एरियाज है या कम एरियाज है। सो आई होप you understand. Okay, now coming to bioenergy, and bioenergy is what? This is the a kind of, let me change it. The kind of for biofuel, and biofuel comes from biomass, right? While biomass comes from organic matter, organic matter, it can be plant-based or animal-based. Okay, so biofuel can be consist of biogas, okay, or syngas, ethanol, and biodiesel. Similarly, green diesel. ठीक हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये वाले इथेनॉल, syngas, biogas, biodiesel, green diesel, these are the products which can be obtained from biofuel, and biofuel in turn comes from biomass which can be used as bioenergy, ठीक है। ये प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं। अब चले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ओके, so they are what? They are eventually to run out in human time scale. Non-renewable energy. So it can be coal, or it can be natural gas, right? Or it can be petroleum, or we also call it oil. Okay, so these are the non-renewable energy resources. Okay, and some people also consider nuclear energy. Nuclear energy is what? Is non-renewable, and since that it produces less emission to atmosphere, while it is, enormous in scale, so that is why it is called alternative source of energy. Okay, इसके प्रोसेस भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है, लेकिन generally when you have coal and when you burn it at around 500 to 1000 degrees centigrade, so it produces what?
cook plus tar coal. Okay, and this process is called carbonization or destructive distillation of coal. Similarly, natural gas is when you have bioenergetic matter, and when you, not you, but naturally it undergoes biochemical and environmental decay, so it gives us natural gas. One of the natural gas found in porous rocks beneath the earth. One of the major components of natural gas is CH4, which is a chemical name known by chemical name is methane or soy gas. Other component can be ethane, propane, and butane. Okay, so it constitutes around 80% in natural gas. So in this way, natural gas produces. And when we talk about uh, petroleum or oil, so it produces from particularly organic matter. So in similar way, but the uh, initial product is different little bit. So biochemical, when it undergoes biochemical or environmental decay, so it gives us a blackish liquid called crude oil. And when we refine this crude oil, that is called manual oil. Got it? So I hope you get the basic idea. Now coming to energy conservation. So energy conservation is not a rocket science. Rather, simple steps are to be taken to save and conserve the energy. And that is, number first, we can go for fluorescent light, okay, utilizing maximum daylight को ज़्यादा इस्तेमाल करना हो गया. एनर्जी ऑडिट भी होनी चाहिए जो कंसर्न है या खुद पता चले कितने मतलब कंजम्पशन होती है. एनर्जी एफिशिएंट appliances are to be built. And similarly, one of the best approach that is we have to drive less, walk more, and
switching off the electric devices when not in use. Okay, and plantation of shady landscape, proper education, and utilizing alternative source of energy, that is renewable, as we talked already, and then reduce, reuse, and recycle. So this approach is particularly concerned to waste management, but the first step, reduce the dependence on non-renewable energy resources. So these were the topics that we have discussed in this class so far, and I hope that you understand the basic idea and the concept. So if you have any question regarding this topic or uh, something else, so you can write a comment, I will be answering. So see you then.